Hello everyone, my name is Vishal. So today I'm going to explain you what is Linux and history of the Linux in very simple way. So पहले देखते हैं what is Linux. तो Linux is an open source operating system. Linux एक open source operating system है. It is used in servers, computer, mobile phones. तो सर्वर्स में, कंप्यूटर्स में और मोबाइल फ़ोन के कुछ एप्लीकेशन भी Linux से बिल्ड होते हैं. Linux is a secure, stable, and free to use. Okay, and what type of Linux OS you can see? Red Hat, Ubuntu, CentOS, and then next, what is the growth uh, in the market of the Linux? तो Linux ग्रोथ हम देखनी चाहे तो इट इज़ डेवलप्ड बाय अ ग्लोबल कम्युनिटी. कंपनीज लाइक रेड हैट, IBM, गूगल, वो सारी Linux को सपोर्ट करती है. IBM का एक खुद का OS है दैट इज कॉल्ड एज AX. गूगल ऑल्सो सपोर्ट द Linux. Okay, इट इज़ यूज वाइडली इन सर्वर एंड क्लाउड्स. तो क्लाउड में भी यूज़ होता है. अगर आप कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म देखोगे तो उनका खुद का है. अमेजोन लिनक्स, OCI लिनक्स, ओरेकल वालों का, अमेजोन लिनक्स AWS वालों का. ओके, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट, हिस्ट्री ऑफ द लिनक्स. तो लिनक्स वाज क्रिएटेड इन द 1991. 1991 में लाइनक्स डेवलप हुआ था और इट वाज डेवलप्ड बाय द लाइनस टॉरवाल्ड्स. So he started Linux as a personal project. एक personal project के project as a personal project उसने start किया था. उस टाइम उसने create किया Linux. So actually the base of the Linux is a Unix OS which was developed in the 1970. So where Linux is used? Linux कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, सुपर कंप्यूटर्स में, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, Amazon, Google, सर्वर्स एंड डेटा सेंटर में. एंड व्हाट इज द की फीचर ऑफ द लिनक्स? तो की फीचर इज लिनक्स है, ओपन सोर्स है, सिक्योर है एंड स्टेबल है. सिक्योर व्हाई? because if you see the file system of the Linux, they do not have the extension. You can directly write a file name, but the default configuration file have a extension like config, like RPM, and there is some file who have extension, or rest all file doesn't have the extension. If you use the Linux, you will understand it. We will cover this part in next video. Let's see. So it is a multi-user and multitasking. So अगर आपने विंडोज सर्वर यूज़ किया है तो अगर आप सेम आईडी से सेम सर्वर पे मैक्सिमम 2 सेशन ले सकते हो 2 आईडी से, या 2 आईडी से. हियर इन लाइनक्स यू कैन टेक द मल्टीपल सेशन. आप मल्टीपल यूज़र से लॉग इन कर सकते हो. देयर इज़ नो लिमिटेशन. और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो. हाईली कस्टमाइज्ड मीन्स ये ओपन सोर्स है. अगर आप इंटरनेट पे जाओगे तो OS विद ओपन सोर्स मिल जाता है, वेयर यू कैन डेवलप द OS बाय योरसेल्फ. ओके, अब मार्केट में इसके जॉब रोल क्या क्या अवेलेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनक्स एडमिन, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, SRE. सो इन सब रोल में लाइनक्स इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप आज देखो तो लाइनक्स एक मस्ट हैव स्किल हो गया. कोई भी रोल में आपको लाइनक्स लाइनक्स एक मैंडेटरी स्किल है. आप कोई भी रोल ले लो, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, इवन द टेस्टर एंड डेवलपर एज वेल. So they must have the basic knowledge of the Linux. Okay, so Linux से क्या होगा? Because as I said कि Linux एक मस्ट हैव स्किल है. एवरी IT पर्सन, अगर आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो तो वो एक
आपके लिए एक हाई ग्रोथ स्किल होगा। थैंक यू।